बच्चों, how are you all? And welcome to our channel, which is Learn Chemistry with Subhashri ma'am. And in this video, we will discuss the rest of the laws. और इससे पहले जो भी laws है उसका description I have already given in my description box, so you can follow that. So आज के वीडियो में first हम लोग किसके बारे में discuss करेंगे? चार्ल्स लॉ के बारे में. So according to Charles, at a fixed pressure, the volume of a given mass of gas increase or decrease by 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. So this is the statement of the Charles law. So according to Charles law, what Charles told? So according to Charles, whenever we are having a fixed pressure, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है या तो फिक्स होता है, at that time जो वॉल्यूम होता है हमारा गिवन मास ऑफ गैस, particularly we are talking about the gas, the volume of a given mass of gas increase or decrease by 1 by 273 of its total volume. Means ये कौन से फॉर्म में है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है. at 0 degree Celsius for each 1 degree rise और 1 degree fall. So अगर हम इसको अच्छे से मतलब इन सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, हर मतलब गैस 1 डिग्री मतलब whenever the gas increases 1 degree more or it decreases 1 degree less, so इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज में कितना होता है? 1 by 273 of its total volume. Clear? So now our next is we should go for the mathematical expression or the mathematical derivation of Charles law. So here better to note it down. So suppose if at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius सपोज हमारा वॉल्यूम कितना है गैस का? V0, और तुम इसको V0 भी बोल सकते हो, because specially we are mentioning gas, that's why at 0 degree Celsius the volume of a gas, like it will be V0 or V0. So जब तुम्हारा 0 डिग्री कन्वर्ट होता है T डिग्री में, at that time the volume becomes how much? VT. Again I am repeating, at 0 degree Celsius the volume of a gas V0 or V0, and at T degree Celsius the volume of a gas becomes VT. So then according to Charles हमारा क्या हो रहा है? VT हमारा कब था? जब हमारा टेम्परेचर कितना था? T डिग्री सेल्सियस था. So at VT is equal to V0 or V0 plus V0 by 273 into T. So this is according to our statement. Next, यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉमन है? V0 देखो कॉमन है. So if we will take V0 as a common, so what should be the remaining? The remaining should be, यहाँ पे अगर V0 कॉमन गया तो यहाँ पे हमारा कितना रहा? 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा? V0 कॉमन गया है, so T by 273. Clear? So again VT is equal to V0 और V0, इसका LCM ले जाओ बच्चों. So LCM लेने के बाद we got 273 and in the numerator part we got 273 plus T and take it as equation 1. Clear? Next, ये जो चार्ल्स लॉ में इन दिस लॉ यहाँ पे एक नया हमारा स्केल इंट्रोड्यूस होता है which is called as your केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. सो यहाँ पे क्या होता है? केल्विन मतलब हम लोग केल्विन सेल्सियस को केल्विन में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं? जितना हमारा गिवन देता है, जितना हमारा सेल्सियस गिवन देता है, प्लस if we will add 273 with the given degree Celsius, then it is converted to Kelvin scale. So which is called as your, this new temperature scale which is called as your Kelvin scale is used for deducing the Charles law. So ये जो Kelvin scale हमारा रहा, ये हम लोग अभी कहाँ पे यूज करेंगे? चार्ल्स लॉ पे यूज करेंगे. कैसे? जहाँ पे हमारा सेल्सियस में है हम उसको कहाँ पे डिवाइड, किस पे डिवाइड करेंगे? केल्विन में डिवाइड करेंगे. So by substituting, let हम क्या करते हैं? 273 प्लस T को let it will be take as capital T, मतलब हमारे न्यूमरेटर पार्ट को हम लोग क्या लेते हैं? कैपिटल T, and 273 means डिनोमिनेटर पार्ट को let it will take as T0. Again I am repeating, न्यूमरेटर को हम लोग क्या लेते हैं? T, एंड डिनोमिनेटर पार्ट को जो हमारा गिवन है 273
it as T naught or T0 which in equation 1. Then सभी अभी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं. देन Vt, so here I am writing Vt is equal to V0, यहाँ पे also V0. Then instead of 273 plus T, now we will write which one? Yes, now we will write T. That is V0 or V0 into T divided by, instead of 273 what should I write? We will write T0 or T0 again. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? Vt divided by T, because टेम्परेचर यहाँ पे है, so टेम्परेचर को ले आते हैं. That is Vt divided by T is equal to, remaining क्या बचा? V0 divided by T0, or you can also write it is V by T is equal to constant, but the condition is the pressure is constant or fixed. So what is the general form of the equation? The general form of equation is V2 by V1 is equal to T2 by T1, or you can also write it as V1 by T1 is equal to V2 by T2, or you can also write V is equal to K2T. And what is the value of K2, or what do you mean by K2? There is no particular value for K, but here K2 is known as your proportionality constant. जैसे हमारा Boyle's law में K1 था, then in Charles' law the proportionality constant is known as K2. Okay, so next हम लोग क्या देखेंगे? Next we will focus on graphical representation of Charles' law. जैसे Boyle's law में हम लोग पढ़े थे graphical representation. So the same thing we will read in graphical representation in Charles' law. But here something is different. यहाँ पे जो ग्राफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज योर आइसोबार और आइसोप्लास्टिक. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोबार? एज वी नो, आइसो मीन्स व्हाट? सेम, and bar related to pressure. So that's why the graph is called as isobar or isoplastic. Means here pressure is constant. जो हमारे स्टेटमेंट में था, किसके स्टेटमेंट में? चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट में. सो ये तुम्हारा ग्राफ है, एंड ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिए हैं? टेम्परेचर. वी हैव टेकन टेम्परेचर एट एक्स एक्सिस, एंड इन वाई एक्सिस वी हैव टेकन द वॉल्यूम. यहाँ पे जो टेम्परेचर है देयर इज हैविंग डिफरेंट वैल्यू, मीन्स आर डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब यहाँ पे जैसे हमारा मतलब नंबर लाइन होता है, जैसे मिडिल में हम लोग 0 लिए हैं, एंड इन राइट साइड वी विल टेक द प्लस वैल्यू, एंड इन द लेफ्ट साइड वी विल टेक द माइनस वैल्यू. सो सी 0, 100, 200, 300, instead of you can also take any other value, and here 0, then it minus 100, then minus 200, then minus 100, and it goes to like this. So यहाँ पे हुआ क्या देखो, on extending the lines, यहाँ पे जो lines है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जो isobar lines और isoplastic lines. On extending the lines to zero volume, if we will extend all the lines, suppose we have taken 4 lines, 4 isobar or isoplastic line. First is P1, then the next one is a P2, then third one is a P3, and then next is one here P4. Okay, so this is their order. So if you will extend the lines, means the isobar lines to zero volume, then what can we able to see? We can able to see that on extending the lines to zero volume, all these lines intercept the temperature axis, as we have taken the temperature at x axis. अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, then all these lines intercept the temperature at minus 273.15. You can see also, मैंने यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में यहाँ पे लिखा है, मतलब I have marked here. So यहाँ पे the particular point is minus 273.15. But all are having different slope. लेकिन उनका कॉमन इनके मतलब जो भी हम लोग आइसोबार्स लिए हैं उनमें कॉमन क्या है? All are extending and all are intercept the temperature axis at the point of minus 273.15. So this is the common in between P1, P2, P3 and P4. But what is the difference in between this? The difference is that all the slopes are having different. Okay, so this is about your temperature versus volume graph in Charles' law, and here I have written some important point which is related to your graph. So that's why I have written it as NB, that is notebook. You can also mention it in your copy. So first point is
Before reaching means whatever I have written here, these all are related to your graph. Means these are some of the important questions, important marker question you can also say. So before reaching minus 273.15 degree, all molecular motion are ceased. यहाँ पे हमारा कहाँ पे था पॉइंट माइनस 273.15 में था ना बच्चों. सो ये जो माइनस, बिकॉज द माइनस साइन इज देयर, जस्ट इमेजिन तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि whenever we are converting any degree Celsius or degree centigrade to Kelvin, then we should add the particular given value of degree Celsius and with 273 plus 273.15, then it converted to Kelvin scale. But here what happened? Before reaching minus 273.15, मतलब because ये किस में है, माइनस साइन में है, all the molecular motion are ceased because the temperature minus में है. So whenever before reaching the minus 273.15, all the molecular motion are ceased. That's why the gas are become liquefied. This temperature is called as absolute zero. Okay, ये है first point. And the next point is temperature below minus 273.15 degree centigrade is not possible. Why? Just imagine अगर टेम्परेचर तुम्हारा माइनस में होता है then obviously the corresponding to volume भी तुम्हारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. So which is meaningless. That's why the negative volume which is meaningless. Then third is the lowest hypothetical temperature at which gases occupy zero volume is called as absolute zero. So this is all about your graphical representation of Charles law. Next.